Hello students, welcome back. I am Payal and today I will teach you Swachh Bharat poem. Students, do you know about the Swachh Bharat? These words do you heard anywhere? So Swachh Bharat means clean India. Swachh means clean and Bharat means India. Bharat means India. So here is the two character is given. One is the girl and one is the sparrow. So here is the one bird and one girl. So let's see students. Here is the first given introduction. स्वयं साफ रहना और अपने आसपास साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। हम सब मिलकर भारत को स्वच्छ बनाएंगे। स्वयं साफ रहना. So here is the giving the very big message to all of you, my dear student. Should take care about cleanliness. Cleanliness means swachhata. Should be clean yourself and nearby your home. In your home surround should be clean and don't throw out the garbage and don't make dirtiness. So here is the all about the cleanliness. So should be promise you not throwing the garbage anywhere. If you take some like chips, chocolates, so wrapper not throwing out in road, keeping in bag, in pocket, then will be put on garbage. So like this, dustbin should be put. So garbage only not the about the cleanliness, because of the little garbage make the biggest very big issues. So let's see students. नेहा ने एक केला खाया. नेहा ने एक केला खाया, खाकर छिलका वहीं गिराया. So she's girl, her name is नेहा. नेहा. नेहा ने एक केला खाया. Let's speak with me students. नेहा ने एक केला खाया, खाकर छिलका वहीं गिराया. खाकर छिलका वहीं गिराया. तभी वहाँ एक चिड़िया आई. तभी वहाँ एक चिड़िया आई, सिर पकड़कर वह झल्लाई. सिर पकड़कर वहीं झल्लाई. लेट्स रिपीट अगेन. नेहा ने एक केला खाया. नेहा ने एक केला खाया, खाकर छिलका वहीं गिराया. खाकर छिलका वहीं गिराया. तभी वहाँ एक चिड़िया आई. तभी वहाँ एक चिड़िया आई, सिर पकड़कर वह झल्लाई. So she is the Neha. Neha's what doing? She's took one banana. She already eat, and what she is doing? Outer cover throw out the road. So that time one birdies came and very rudely sing and scolding like. Then see next picture. Here is the girl listening something and bird is
speaking something, telling something. So let's see what she is telling. अपनी चोंच खोल चिड़िया ने, अपनी चोंच खोल चिड़िया ने, उस छिलके को तुरंत उठाया, उस छिलके को तुरंत उठाया। छिलका कूड़ेदान में डाला, छिलका कूड़ेदान में डाला, प्यार से नेहा को समझाया, प्यार से नेहा को समझाया। So here is this sparrow bird. She took the bananas cover and put on the dustbin, and then bird telling about Neha, don't do like this. This is the bad things. This like she is telling. And students, here is the very important message for you. कविता में मिलने वाली सीख का स्टिकर छात्रों से अपनी कॉपी में लगाने को कहे. So see students, in your textbook in last have lots of stickers. So stickers don't waste. This all stickers very useful to in your book should be stick if stick in your copies. So don't waste these things, remember. Then next see student, बोली चिड़िया ठीक नहीं है, बोली चिड़िया ठीक नहीं है, सड़क पर यूं कूड़ा फैलाना. कूड़ा मीन्स गार्बेज. प्यारी नेहा हमको अपना, प्यारी नेहा हमको अपना प्यारा भारत स्वच्छ बनाना, प्यारा भारत स्वच्छ बनाना. So here is this bird is saying, Neha, see, this is not good. Please don't do like this. This is not good to garbage throw on the road. प्यारी नेहा हमको अपना, and dear Neha, don't do. We should do, make our India very clean, neat and beautiful. Like this request she is saying. Then next, हम सब सदा घरों में अपने, हम सब सदा घरों में अपने साफ सफाई रखते हैं, साफ सफाई रखते हैं. फिर बोलो सड़कों गलियों को, फिर बोलो सड़कों गलियों को. सड़कों गलियों मीन्स रोड. क्यों हम गंदा करते हैं, क्यों हम गंदा करते हैं. So here is the bird saying, we are our home means all cleanliness doing. In our home we are throwing garbage, mom dad will beat you. So, and no one is the throwing garbage in room, home, no one. Why? Because we are living there, so should be neat and clean. If something is dirtiness, so what happen? Have fever, germs will there, then health issues like this. So that's why we should take care of about cleanliness. So student should make cleanliness
बोलो सड़कों गलियों को क्यों हम गंदा करते हैं. Then she is asking if we are take care about home, about all cleanliness, not throwing garbage, any one part of the dust. So why we are doing like this, in throwing garbage in out road. So these types of the question bird is asking. So that time Neha is thinking about, yes, really, why we are doing like that. Then next, साफ रखेंगे, साफ रखेंगे, साफ रखेंगे, साफ रहेंगे, साफ रखेंगे, साफ रहेंगे, साफ रखेंगे. आज कसम हम खाते हैं, आज कसम हम खाते हैं, साफ रहेंगे, साफ रखेंगे. आज कसम हम खाते हैं. कहीं करेगा कोई न गंधा, कहीं करेगा कोई न गंधा. भारत स्वच्छ बनाते हैं, भारत स्वच्छ बनाते हैं. So again here is the bird is saying something. We will keep clean, keep clean and साफ रहें. We will clean ourselves also and in surround also will be clean. आज कसम हम खाते हैं. कसम means promise. We all doing promise today. We will not throwing the garbage out, clean ourselves, neatly clean, wear dress, neatly clean take bath, neatly clean teeth, should be hand wash and then food eat. Don't throw garbage around the your home. So like this bird is saying. So here is the all about the Swachh Bharat. So here is the two characters, Sparrow and Neha. So see students, next is the question answer. Abhyas means study. Shabdarth means words meaning. Jhallana, jhallana means गुस्से से चिढ़ना, गुस्से से चिढ़ना. If we are doing some mistake again and again and again, then person will be angry. Angry means gussa. Swachh means saaf. Swachh means saaf means clean. कूड़ेदान, कूड़ेदान मीन्स जिसमें कूड़ा डालते हैं. कूड़ेदान मीन्स डस्टबिन, कूड़ेदान मीन्स डस्टबिन. So this words meaning should know. Then next is कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करो, कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करो. So here is the given, filling the blanks related to the poem should be fill. बोली चिड़िया, बोली चिड़िया, and this should be write in notebook. This should be fill in the your textbook. Should be correct words neatly and properly write and try to make less mistakes. ठीक नहीं है सड़क पर यूं कूड़ा फैलाना. So in first line 3 words came, in one line only one word came, and should be write students in dots down like this.
Don't write in upper. Most of the students writing upper side, dot dots, upper right. Don't write upper, should be write in down. सड़क पर यूं कूड़ा फैलाना. The next line is ख. साफ रहेंगे, साफ रखेंगे. साफ रहेंगे, साफ रखेंगे. आज कसम हम खाते हैं. आज कसम हम खाते हैं. So here is the filling the blanks done. Then next question. Next question is निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो. So give the answers following the questions. मौखिक. मौखिक means oral. मौखिक means oral. If in your exam is saying teacher about Hindi, आप सभी की मौखिक परीक्षा है. मौखिक परीक्षा मीन्स ओरल टेस्ट. मौखिक परीक्षा मीन्स ओरल टेस्ट. क. चिड़िया क्या देखकर परेशान हो गई. चिड़िया क्या देखकर परेशान हो गई. चिड़िया जो कि नेहा ने कचरा फेंका था रोड पर, तो केले का छिलका देखकर वो परेशान हो गई. ख है चिड़िया ने नेहा को क्या समझाया. नेहा को चिड़िया ने क्या समझाया कि इस तरीके से हमें कचरा नहीं फेंकना है. ग. भारत को स्वच्छ बनाने के लिए क्या जरूरी है. सो भारत को स्वच्छ बनाने के लिए क्या जरूरी है कि हम खुद भी साफ रहे और हमारे आजू बाजू भी सफाई रखे, तभी हमारा भारत क्या बनेगा, स्वच्छ बनेगा. सो दिस टाइप्स आंसर शुड बी गिवन इन ओरली. ओरल कॉल्ड मौखिक. ओरल कॉल्ड मौखिक. लिखित. लिखित मीन्स इन राइटिंग. अगर इफ योर टीचर इज से लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा मीन्स written test. First question is नेहा ने केला खाकर क्या किया. क्या किया नेहा ने केला खाकर. नेहा ने केला खाकर उसने केले को रोड पे फेंका था. राइट. सो नेहा ने केला खाकर छिलका वहीं गिराया. छिलका वहीं गिराया. राइट. ख क्वेश्चन. नेहा ने क्या कसम खाई. नेहा what promise given. नेहा ने यह कसम खाई कि साफ रहेंगे, साफ रहेंगे, साफ रखेंगे. क्लीन ourselves एंड साफ रखेंगे. क्लीन. Then next is in next page ग. ग question is चित्र देखकर सही काम पर स्माइल व गलत काम पर सैड स्माइल बनाओ. So this is the emoji. It's called emoji. So this emoji is happy or sad. So here is the given lot for work. Here is the given for work. Which work is good should make happy face. If work is bad, so make sad face. So first work is one boy is giving water to all plants. So this work is good or bad? This work is good. So we are making smile in first round. In second, here is the Neha. Neha is the throwing garbage on road. This thing's good or bad? This is bad. So we are making sad face. Here is the one girl. Maybe she is get up and cleaning the bed. So this is good thing or bad thing?
Yes, sure. This is the good thing because she's cleaning bed. So make the smile. Here is one more girl. She's throwing garbage on dustbin. Putting garbage on dustbin. So this thing good or bad? Tell your mama. Okay. So these things good or bad? You tell. Then here is the पढ़ो समझो और लिखो. पढ़ो समझो और लिखो. So here is the words given should be dark. Here is already words given dot 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 dot. So should be highlight again dark. लड़की. लड़की means one. लड़की means one. One girl. लड़की means one girl. लड़की means girl. लड़कियां means many girls. लड़कियां means many girls. पत्ती. पत्ती means leaf. पत्ती means leaf. पत्तियां means many leaves. Then गुड़िया. गुड़िया means doll. गुड़िया same dolls. चिड़िया. चिड़िया one many. So here is the same words given should be dark. Then next we see in next question चित्रों के नाम बोलो. ड और ढ से मिलाओ तथा अंतर बताओ. So should be match the pair. What is this picture of? सड़क. सड़क means road. ड will came. So here is सड़क. सीढ़ी. सीढ़ी. पेड़. ड came. This boy is doing study. Study is Hindi called पढ़ाई. ड will came. बढ़ाई. ड will came. बढ़ाई. This came. चिड़िया. This चिड़िया will came here. So this type match the pair. In the next question answer, see students, here is words already given. पुस्तकें, सफाई, झाड़ू, पर्दे, अलमारी. So see. आज सबने घर में what they are doing cleanliness. So सफाई की. In first came सफाई. मम्मी ने मम्मा here what doing झाड़ू. झाड़ू लगाई. पापा ने here पापा what doing cleaning the curtains. Cleaning curtains. Curtains called in Hindi पर्दे. पापा ने पर्दे झाड़े. भैया ने दिस इज द अलमारी. अलमारी में पुस्तक लगाई. नेक्स्ट सी स्टूडेंट्स, सही जगह पर अन साउंड लगाकर शब्द बनाओ. सो हियर इज दिस टाइप डॉट शुड मेक. हियर वर्ड्स ऑलरेडी गिवन. गंदा. गंदा. देन dot will came, so what sound will came? Na sound will came. गंधा. बंदर. बंदर.
but if point will came, so bandar. Satara, satara. Here is the right, satara. If bindu will came, so संतरा, संतरा. सुनो ध्यान से, so CD. So this question answer only in CD is available. So this answer don't know. Then here is the रचनात्मक कार्य. One activity is given. कोड समझकर जानो क्या लिखा है. कोड समझकर जानो क्या लिखा है. So here is the already is number given and here is the answer key also given. Number should be follow and write the words, correct word. In 2 what write? Swa. Swa write. In 4 number cha. So what word will came? Swachh. Bharat. Abhiyan. 5 bha. Ra. Ra in 9 number. Here is the ra. In 7 number is ta. Then Bharat. Abhiyan. 8 number is a. Then 1 number here bhi. 6 number ya. And 3 number is na. So Swachh Bharat Abhiyan. Word will came Swachh Bharat Abhiyan. Clean India Mission. Clean India Mission. स्वच्छ भारत अभियान. विज्ञान से जुड़े. विज्ञान मीन्स साइंस. विज्ञान मीन्स साइंस. उचित शब्द चुनकर कविता पूरी करो व रंग भरो. So here is the tree given. Should be use pencil color or crayons color and color this tree. Then here is the already helping words key already is given. Should be use this and fill in the blanks this poem. भारत. First will came भारत स्वच्छ बनाएंगे हम. In next came कूड़ा. कूड़ा न फैलाएंगे हम. पटाखे नहीं जलाएंगे हम. कागज के थैले. कागज के थैले मीन्स पेपर बैग. नीत नए पेड़ लगाकर हम धरती हरी बनाएंगे हम. पेड़ मीन्स ट्री. भारत. धरती मीन्स पृथ्वी, अर्थ. पर्यावरण को स्वच्छ बनाकर अच्छे बच्चे कहलाएंगे हम. So here is the all questions answer finished. Should be fill in the textbook in correct way. Don't make mistakes, students. Thank you for watching. Like, share and subscribe. Take care.